Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, viewers, to yet another episode of CxO Rendezvous with Saad Sikandar. Today, our esteemed guest is all about fintech, is all about taking risks, is all about changing an industry and transforming the industry and himself for this financial inclusion. Please welcome Mr. Saad Niazi, who's the Chief Operating Officer of Wemsol with their product Kinu. Assalamu alaikum, Saad. How are you? Walaikum assalam, Shazad Saab. I'm fine, Alhamdulillah. Thank you for joining us today. Saad Niazi is one of our valued members. And Saad, without further ado, I would like to you to introduce Saad Niazi, the person, not the Chief Operating Officer, to our viewers. Saad Niazi, सबसे पहले तो I would like to send my best regards and salam to everybody. Saad Niazi is a curious soul who always wishes to explore new ideas, new things, and walk paths that people talk about and who he thinks will take him towards success. And is a firm believer of carrying others with him and sharing his good lucks and fortunes with his friends and with his colleagues, whom he thinks are his partners and are very dear to him. Probably that's what Saad Niazi is all about. I think Saad Niazi is a brilliant content curator and a brilliant content writer. The way you use those words and you put them in a nutshell, very interesting. So let's hear from the Chief Operating Officer of Wemsol. What is Wemsol all about? So, Wemsol is a payments company which was formed in 2013, and we can easily say that we are probably the first real fintech of Pakistan back in the day when the term fintech was not very well known in Pakistan. And with the idea of digitizing Pakistan's payments and how payments can be digitized, we went about solving this problem, considering the local dynamics of the country. We knew that the digital payments will be highly dependent on the infrastructure, which is largely absent in the country, and we are far behind. We probably were in a behind certain African countries as well. So that is how the journey started. The regulatory environment at that time was evolving, and we evolved ourselves with it. Now, Alhamdulillah, तो we are फिनटेक का पता भी नहीं था लोगों को. बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नोन नहीं थी. कॉन्टैक्टलेस का नहीं पता था कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स क्या होती हैं. देन हम दोनों चीज़ों को कैरी करके चलते रहे. माय बैकग्राउंड वाज बैंकिंग. आई यूज्ड टू वर्क फॉर फैसल बैंक. माय कोलीग्स whom I brought on board were also the core team was comprised of ex-bankers who were related to this area or technology. Moving on with the evolving environment and the regulatory ambit, we also evolved and moved along with it. That was probably the challenge part and the advantage as well. Now, mashallah, we are an EMI license holder from State Bank. We are one of the largest acquirers in the country. By acquiring, we mean our POS machines accept digital instruments, and we are one of the largest in the country. Alhamdulillah, our brand, due to our, my team's hard work, Alhamdulillah, our brand is significantly renowned in the country, but a long way to go still. So I think the probably one of the oldest and probably one of the most pronounced payments company in the country. That's what Kino is. Wemsol is our company's name. Kino is our brand name by which we generally operate through on. I mean, we offer e-commerce payment gateway. We offer our acquiring network. We offer consumer wallets. We're also getting into merchant wallets. So that's what Kino is. Wow. So how was the transition, or how what were the challenges back in 2013, which is almost 9 years ago, when people did not understand this? In fact, I'll give you my example. The first time around, I think 2012 or 13, when we were having a chat, this is also for my live viewers, Saad was trying to explain to me what he's getting into, moving from a bank. And a person like me, who's was then old school, I probably am still. I said,
what is this going to do? We have those POS machines for Alphala and HPL. You're going to get into this market, and from something which is a secure job, you're moving into something which is a totally new entity. And mashallah, I'm very proud to say that 9 years down the road, they're the market leaders. They are challenging the POS market, the payment gateways. They have established fintech when this term was also not coined. क्या challenges आए थे आपको उस वक्त, and how much time did it take to for the market to register what you're selling? थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा बिकॉज ये उस वक्त की बात है जब मैंने आपसे पढ़ा था, आप पढ़ाते थे सीबीएम में, एंड आई मीन आई डोंट नो आप इस बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, और द व्यूअर्स हु वुड व्यू दिस, दैट इंस्पिरेशन आती है बहुत सारे लोगों से मिलती है, और बचपन की इंस्पिरेशंस को आपको खत्म नहीं करना चाहिए, क्यूरेट करना चाहिए, बी इट दैट यू आर ऑन योर जॉब और नॉट. So there was always this thing that I would do something different, make my mark, at least once in my life. So when we started, you were absolutely right. The pressure was not only from friends and from seniors like you, but pressure was also from the family that when you're at a high in your banking career and you're making good money, why leave it? Because and the reason was I had a fair idea because I belong to this area and belong to this industry since the longest time. I knew it's a green field. People consider it an area, a no-go area, but it's a green field. There was no way in the world that Pakistan could have been stuck at that level for the time, and who would carry that flag? And the one who does it. So Kinu comprises a very good set of people who have very good spirits, but we are by no means Einsteins, right? And we knew that the one who does the hard work in the initial 3 4 years, and it's not going to be hard work, it's going to be sheer hard work, personal sacrifice. If so, so we luckily had those kind of people around. We found each other, and one of our sponsors and CEO is Asan Saab. I found him. He's also got that kind of ability in him. I mean, his age may be whatever, but he still is thinks like a young boy, and he acts like one. And That's very important. yeah, so we had that knack. Then the challenge part was how to explain. So we tried to figure out a model which makes us most less dependent to other entities. I'm not talking about publics in general. I'm talking about our business model should not be, dependent on one or two entities. For that matter, our model should. We work with the one bank model, right? So and we saw that multiple players coming in, depending on multiple banks for their business, and they ended up not, but they were not able to execute their own strategies. They could not devise their own tactics. Shazad bhai, you were the one who actually used to tell everybody the differentiation between strategies and tactics, and I till date tell my people about it. So it's. So, I mean, strategy excellence and the strategic excellence and tactical brilliance, those are two terms. ये important था. जो important बात है देखें वो ये है कि your model should be such जिसको आप टेस्ट करें, आप इसको चैलेंज करें, आप इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर डिफेंसिव ना हो. दैट्स द की. Secondly, right people on the bus is very important, and then things start to fall on their place. रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन ख्वाब देखना उसके साथ बहुत जरूरी है. दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है ना, ख्वाब और रियलिज्म. सो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त था. आई थिंक लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, एंड हम सब ने मेहनत बहुत की. देयर वाज नो शॉर्टकट टू इट. Yes, वी स्टिल वर्क वेरी हार्ड, एंड नाउ आई थिंक आफ्टर प्रॉब्ली 9 years or so, वी बिलीव कि अब हम इंशाल्लाह बहुत स्टेक ऑफ पोजीशन पे हैं. वी आर अ लोकल चैंप ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह. We now see the market that we paved. People, international players are entering into it, but we will for sure give them a run for their money. We will beat, inshallah, most people. Now, I'm confident after 9 years. I don't give these kind of statements. You know me, but Kinu has gone through that hard work, the experience, the knowledge base that we have gotten, and we are, mashallah, blessed with very good people. you spoke of strategy. Very importantly, the next question is, you see, when a product comes in, be it a service or a product, and especially when you are one of the founder members of that industry, and you're part of that team when the industry is being created,
it's easier to maintain quality and customer satisfaction. As you start to grow, what strategies did you use to keep that quality and customer satisfaction consistent? The first and foremost, we introduced a concept, and we believe in that concept. We live by that concept. That is merchant specific payment applications, MSPA. Probably a term that we coined ourselves, and we believed very. This is our core value actually. That whatsoever the standard we have to meet, but we have to take on every individual merchant on their needs. We have to we have to ascertain their needs for them. That has been our motto since day one when we talk about services. Secondly, we made sure that from day one, the corporatocratic bureaucracy should not come into our company. Our reaction time to any problem and our reaction to, because we are not a bank, we are a non-banking entity who entered into this space for the first time, and our competition happened to be, and the challenge part was that our competition happened to be banks. Banks, That is yes. exactly what we spoke about 8 years ago. You Oh, said, well, yes. how I do you remember guys that. Yes. Yeah. and Shazad bhai, I don't know if you remember, but I told you the same thing, that the reaction time of a bank cannot change because it has structural issues. They have wonderful resources, but this work is something that requires focus. It's not actually a bank's job to do this work. And so carrying on with that, so our entire team, we have more team to service our merchants than to sell more products to our merchants. Our entire we have dedicated account managers in our technology team as well. We have dedicated account managers in our sales team and service team as well. So we our criteria and our KPI is never to increase volumes. That's the best part. Although we have mashallah grown in double digits since ever, and since last year, and if I compare the last 12 months, we have witnessed a growth of about 50%. Alhamdulillah. Mashallah. And Mashallah. at this stage, achieving that is great, Alhamdulillah. But you see, we never set sales targets. That's one thing that we go against every book that we have read in our degree. And we believe that if you satisfy your customers, which happens to be merchants primarily, also consumers, then the viral coefficient will take care of the growth itself. You will be referred to, and you create a demand, you create an otaku that eventually pulls your service towards them. And I think for most, this is our core value, and this has worked very well for us. Hence, I It's more believe. about service than trying to sell. And Yeah, yeah. I'm so thrilled to know and very delighted to know that you have more people dedicated to account management than sales. Yeah. And you have people in tech dedicated to account management for customer service. Are you the pioneer? You're definitely the pioneer, but are you the only provider in a non-banking system for the POS machines and merchant payments? There are other players who have entered, but they haven't yet started their operations. So, I mean, for now, I So can you're easily the say, one only operating. yeah, currently. Okay. I talking to you, I realized an instance. I moved from Karachi to Islamabad. I think it was my first week in the city. Very conveniently, I just parked my car at a fuel station and told them to fill gas. उन्होंने गैस भर दी और पेट्रोल डाल दिया. पेट्रोल डालने के बाद मैंने कार्ड निकाला. उन्होंने कहा जी कार्ड तो नहीं लेते. मैं कहा जी मैं कराची से हूँ, मैं कैश नहीं कैरी करता, तो अब क्या करें. खैर वी सॉर्टेड दैट आउट, वेंट टू अनदर पंप, द नेक्स्ट डे द कार्ड नहीं लेते. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल. और हम कहीं बातें करते हैं फिनटेक के एवोल्यूशन की, फिनटेक के बढ़ने की. अ, जब कराची और इस्लामाबाद मेट्रोज में ये सिचुएशन है, the acceptability or non-acceptability of plastic payments at merchants, and merchants like petrol stations, which are brands. It's not a Kiryana store, or it's not a conventional ration shop that is not accepting cards. And this is in a metro city. What future do you see for rural areas, rural bhi chhode, semi-urban areas, to have access to such financial wallets and payment gateways and merchant payments? कुछ जी, नजर आता है? सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. यस, मुझे बिल्कुल नजर आता है टू सम इट अप, बट
there's a story, there's a huge story. We have to follow a certain path. You see, our environment and our thought process, and when I say our thought process, I believe I'm talking about people who are at the helm of affairs, right? The governments, your bureaucracy, they are not sensitized with the importance of digital payments. You see, why do we talk about digital payments? It's certainly not fashion. If it were fashion, then probably Pakistanis are such people who are logical enough to, let go of certain things that don't make monetary sense, right? We're all aware of that. So We do it, make rational choices. of course, yeah, we are trained that way, groomed that way. It's in our DNA. Yeah, so eventually we do that. However, digital is important. Why? It is the source of all stunted growth in of Pakistan's economy, and I'll explain it to you in few sentences. So we have the highest discount rate in the region. You agree with that? That means that's a source of all evil. Why? Because that results in higher loans. There is no way that without proper disbursement of loans to the right class, to the right people, to the right recipients, and to the lowest strata of the society, that a business will grow. Government cannot ensure jobs, and without growth in business, there will not be any jobs, right? Pakistan is one of the fastest growing population. The this this young population requires work, they require money, they have aspirations, and it turns into negative results, which we are all aware of, and I'll go into that. So everywhere in a third world country where digital has taken prominence, or digital acceptance and usage has taken prominence, there certain catalysts are introduced by the governments. Now the problem is our taxation regimes, our understanding, we are working in silos till date. The taxation regimes are very complicated. Why they are complicated? Because of the last 70 years, and there were certain problems which you all have to understand, because those were realities of the time. We have still not able to prioritize. I'll give you an example. I'll give you example of neighbors. Iran, oil subsidy. They give oil subsidy to every Iranian who's Hmm. above it, right? In dollars. They made sure that in 2011 they decided that oil subsidy will not be given out in cash. It will be given in your bank accounts, and they discourage taking That'll be out. documented, Exactly. legitimized. And they incentivized, if that cash is not taken out and spent on POS machines. There you go. Now Iran has about 6.5 million POS machines implemented in Iran. Wow. 6.5 Wow. million. You may think I've got I'm stuttering somewhere, but it's पाकिस्तान exact. में कितनी है? पाकिस्तान में कितनी है? सर पाकिस्तान में, पहले मैं छोटी बात करूंगा फिर मैं स्टार्ट दूंगा। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में डबल हो गई हैं, लेकिन अब जाके करीब कोई 80,000। ठीक है, बट 80 पिछले 2 साल 80,000 80,000 machines in Pakistan and 6.5 million in Iran. इन ईरान, या I'm इन ईरान hearing this correctly. और वो 80,000 हुई हैं डबल होने के बाद. डबल होने के बाद This वो is a shock. This is बिकॉज a shock. स्टेट, Definitely. या एंड स्टेट बैंक ने जो मेजर्स लिए हैं उसके बाद ये डबल हुई हैं। We are blessed with a very good regulator, by the way, one of the most forward looking regulators, जिनकी regulations को बाकी मुल्क कॉपी भी करते हैं। ठीक है। However, जो हमारी गवर्नमेंट में है और जो हमारी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, ये रीजन है सबसे बड़ा कि हम आज के दौर में डिजिटली आई मीन हमारी डिजिटल एक्सेप्टेंस दुनिया की लोएस्ट है। ठीक है। वी हैव द लोएस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन की जो पर पॉस पेनिट्रेशन, उसमें वी आर लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब आती है बात वाई पॉस। लो, इट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ हम बहस अलग तरफ ले जाते थे। जो इंडस्ट्री थी वो कहती थी जी सस्ता सोल्यूशन लेके आ जाओ चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया में जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज होती है, ठीक है, उसको आप लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से मोल्ड करते हैं। देयर इज नो इंटरनेशनल सोल्यूशन टू अ लोकल प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम, the solution is at the core same for the entire humanity, right? Exactly. Exactly. दूसरी बात ये सर कि जब तक कोई कैटलिस्ट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की रियलिटी क्या है, यहाँ कैश बहुत ज्यादा चलता है, यहाँ गाड़ियां घर कैश पे खरीदे जाते हैं। एक ब्रेव मूव जब तक गवर्नमेंट नहीं लेगी,
कुछ भी आपको खास चेंज नहीं दिखेगा, हम यही 15-17% से ग्रो करते रहेंगे। हाउएवर लेकिन ब्रेव मूव्स ले तो रही है गवर्नमेंट, कैश इकोनॉमी को कम कर रही है, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रही है। सर रेडिकल मूव लेना बड़ा लाजमी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए वहां भी मैं समझता हूँ आईएमएफ एंड एवरीबॉडी, ये बड़ी ये मजबूरियां होती हैं। पाकिस्तान का बजट जो है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता, टू आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाउएवर हमें ब्रेव होने की जरूरत कहाँ है और क्यों है? सबसे पहली बात, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैं हर एक को बोलता हूँ, हमने 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है? कैश से नहीं खरीद सकते, चेक से भी नहीं खरीद सकते, ठीक है? आप इसको डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू खरीदें। अब बात आएगी आपके कार्ड की, तो इतनी लिमिट ही नहीं होती सर। तो जी हुँ, ये नई गेम हमें बनानी पड़ेगी। आज आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी, तमाम एक्सपर्टीज, तमाम ऑपरेशनल नॉलेज मौजूद है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। पाकिस्तान के हुँ, पास इस वक्त दुनिया की में जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसका एक्सेस भी है। आपके पास लोकल एक्सपर्टीज है, आप लोकल बना सकते हैं। हमने अपना स्विच लोकल बनाया, एक एक कोड की लाइन हमने लोकल लिखी है, जो हमारा लोकल पेमेंट गेटवे है ऑनलाइन। ये सब हो सकता है, ये कभी भी नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, ठीक है? इसी तरह से आप, गवर्नमेंट अगर ये कहे कि 2024 दिसंबर के बाद से गवर्नमेंट डील ही नहीं करेगी कैश में, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, डील ही नहीं करेगी, 3 साल का वक्त दे दें। मैं आपको बता रहा हूं सर, जो आपको लग रहा है ना कि 80,000 पे हम आज पहुंचे हैं, तो 10 साल बाद जाके 80 कहीं 2 लाख पे हम ऐसे नहीं होता। अब तो 8 ये मिलियन पे पहुँच जाएँगे। सर ये वायरल फैलता है, ठीक है? हुँ, प्रोडक्ट्स खुद आना शुरू हो जाएंगी, आपके पास बाहर का पैसा अट्रैक्ट होगा कि देखें यार यहाँ पॉलिसी रिजीम्स अच्छी हैं। दूसरा देखें, पूरी दुनिया में कैपिटल ना किसी मुल्क का नहीं होता, कैपिटल का कोई मजहब, कैपिटल का कोई नेशन नहीं होता। कैपिटल वहां फ्लो करता है जहां लुक्रेटिव एनवायरनमेंट होती है। हुँ, हुँ, लुक्रेटिव एनवायरनमेंट रेगुलेटर नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है। हमें ना बड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि हमें पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली बनानी है, तो उसके लिए सही जगह कौन सी होती है? सिलिकॉन वैली वहां थी जहां मौसम अच्छा था, जहां पे टैक्स रिजीम अच्छी थी। गवादर क्यों नहीं है हमारी सिलिकॉन वैली? हुँ, जस्ट से हुँ, अहमदाबाद क्यों नहीं है हमारी सिलिकॉन वैली? जस्ट एग्जांपल में भी कोई और रीजन हो कि जी, नहीं है, बट हुँ, ऑल आई एम सेइंग इज, ये जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो आप बिजनेस में ग्रोथ, किसी भी, आप कॉटन के काम को भी नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है ना? सो डिजिटल में आज हर चीज राइप है। मैं इसलिए बहुत पुरुमीद हूँ। वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल नाउ, मैन पावर, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी। द ओनली थिंग लेफ्ट इज one one good policy move and one good catalyst, and it will just change Pakistan. ये एंड 5 यू थिंक साल इट हैज़ टू बी अ रेडिकल मूव? It has to वो be a radical, सर rational सर सर initiative by the ईरान ने ऑयल सब्सिडी कही थी ना, इंडिया ने क्या किया था सर? इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया था। डीमोनेटाइजेशन पे सब ने मोदी गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया। हाउएवर 1 साल तो मुश्किल गुजरा, देखें वो मुश्किल गुजारनी पड़ेगी। वो हुँ, ऐसा ही है कि हुँ, इस साल हमारे पास चाय नहीं है, अगले साल सबको फ्री मिलनी है, ठीक है? हुँ। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रेफरिंग टू, राइट? नहीं, नहीं, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन सर एक बात है ना साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इट्स फ्यूचरिस्टिक एंड दैट्स योर रोल। यू आर ट्रस्टेड पर्सन हू कैन एक्चुअली हैव दिस कन्वर्सेशन। मेरा मसला ये है कि जब मैं एक कॉर्पोरेट अकाउंट खोलता हूँ, मैं अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट खोलने जाता हूँ, तो वो 20 मिनट में नहीं खुलता। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशंस और चीज़ें हैं, वो काफ़ी लंबी-चौड़ी हैं। आई एम शेयरिंग पर्सनल एग्ज़ाम्पल्स एज़ वेल एज़ जो लोगों के साथ मैं देखता हूँ। When I finally open that account, it's a corporate account. I can have a checkbook for it. It can be a checking account. मुझे आप कार्ड नहीं दे सकते। कॉर्पोरेट एटीएम कार्ड, प्लास्टिक कार्ड आप मुझे आज तक नहीं दे सके। मेजॉरिटी बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मतलब व्हाई दैट हैज़ नॉट हैपेंड? उस वो तो गवर्नमेंट ने नहीं लाके देना ना। अब हम पॉलिसी फ्रेमवर्क से थोड़े से इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे आ जाते हैं। कॉर्पोरेट्स की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे आ जाते हैं। जी जी, इफ बाय यू नो ओपन अ मीन्स, जी बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि जो यहाँ पे बिजनेसेस काम कर रहे थे या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर, क्योंकि देखें कंपटीशन नहीं, नहीं, क्रिएट, अभी भी नहीं है ना। आज भी मुझे मिल सकता है क्या? एक प्लास्टिक कार्ड, एक एटीएम डेबिट कार्ड कॉर्पोरेट अकाउंट का मुझे नहीं मिल सकता, कंपनी सर अकाउंट का देखिए मुझे नहीं आपको मिल पता है सकता। कब मिलेगा, आपको पता है कब मिलेगा? स्टेट बैंक ने बहुत अच्छी मूव करी थी 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, एक रेगुलेशंस निकाली ईएमआई की, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ऑब्वियसली जिस तरह के हमारे हालात हैं, जिस तरह हमारा व्हाइट मनी ब्लैक मनी का मसला है, तो उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बहुत लाजमी होती है और फिट एंड प्रॉपर होना लाजमी होता है।
आप अगले आने वाले साल में देखेंगे कि आपको एंटिटीज कहेंगी सर घर बैठे 30 सेकंड के अंदर अकाउंट खोलें। आप कीनू का वॉलेट अकाउंट वाकई में 1 मिनट के अंदर खोल सकते हैं। बाय द वे आई कैन क्लियरली से हम अभी कार्ड इशू करने के लिए प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर रहे हैं। आपको कार्ड भी 2 दिन के अंदर आपके पास आपकी घर पे पहुंच जाएगा, या जो आप एड्रेस देंगे आपका एड्रेस भी डिजिटली वेरीफाई होगा। आपकी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, ईमेल एड्रेस सब डिजिटली वेरीफाई होगा जैसे पेपैल में होता है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी और भी कंपनीज हैं, हम नाम सुनते रहते होंगे वॉलेट्स की, सब कर रहे हैं। देखें, स्लो मूविंग एंटिटीज जो आपके साथ इस तरह का सलूक कर रही हैं, जो इवॉल्व नहीं कर रही, दे विल सीज टू एग्जिस्ट। ये वक्त बड़ा बेरहम है, आप जानते हैं इस बात को, राइट? वक्त बड़ा बेरहम है, इसने निकल जाना है। और अब देखें, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ा ब्रेव मूव था ईएमआई का लाइसेंस इशू करना। सब ईएमआई दैट नहीं होंगी आई एग्री, आई सक्सेसफुल, एग्री। सब ईएमआई सक्सेसफुल नहीं होंगी, नॉट लेकिन ओनली ब्रेव बट वेरी रैडिकल ऑल्सो। वेरी रेडिकल। जरूरत, वक्त की जरूरत ये थी कि हम्म, देखें, आपने क्ले फीड कर लिया, मूव नहीं कर रहे। शहजाद भाई जैसे जो कस्टमर हैं, ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि यार क्यों नहीं हो सकता। एक और बड़ा मसला क्या है सर, एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। यू अंडरस्टैंड? हम्म, हम्म, मुझे 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 दुनिया में बहुत जगहों पे बहुत बातें लोग करते हैं, खास तौर पे गोरे थोड़े से बेचारे ना। अच्छा, गोरे का साथ क्या होता है, दे आर नाइव इन द सेंस, वो बड़े हुए होते हैं सोशल सिक्योरिटी के साथ, तो हम्म, उसकी एब्सेंस हम्म, का उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप आंखों के ये बगैर तो पैदा हो। होता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो होगा, ये तो गिवन है, हाँ, बर्थ तो आप राइट है। आंखों, एग्जैक्टली, आप आंखों के बगैर पैदा हो ना, ये वो वाली बात हो गई, राइट? हम्म, तो हम्म, गोरा ये कहता है क्यों नहीं होता, मैं कहता हूँ भाई सोशल सिक्योरिटी की एब्सेंस है यहाँ पे। मैं किसी को लोन दूंगा, अभी बहुत सारी बाय नाउ पे लेटर वाली कंपनी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि हम्म। वो, उनको बंदा पैसे उनसे अकाउंट बनाएगा, बंदा जो है वो उनसे उधार लेगा, भाग जाएगा, बाहर इवन भाग जो आपके जाएगा। लोन ऐप्स बने हैं, आपकी एडवांस पेमेंट्स, एडवांस सैलरीज के ऐप्स आए हैं, फिनटेक में काफी एवोल्यूशन हुआ है, बट वो भी अपना रिस्क मिटिगेट करके ही चल रहे हैं। सर उसकी वजह ये ना, वहाँ देखें बिजनेस में क्या होता है, इस तरह के बिजनेस में आप प्रोविजन फॉर लॉसेस बड़ा रखते हैं, लेकिन आप हम्म, बुक साइज बहुत हम्म, बड़ी प्रोजेक्ट करते हैं, राइट? यू हम्म, कवर अप द बुक साइज। हाउ एवर, एक बंदा डिफॉल्ट करके जाए कहीं और, वो ना घूम पाए, वो इसी खौफ से डिफॉल्ट ना करे। ये पाकिस्तान में इसलिए नहीं, बिकॉज लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो यस, जहां सोशल सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे कदगने हमेशा ज्यादा होंगी, दैट्स अ रियलिटी। बिल्कुल। हाउ, आप जैसे कस्टमर ने तो ऐसा नहीं किया ना। तो ये, अब आप देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ ईसीआईबी के साथ साथ अब तस्दीक नाम की एक कंपनी है जो जो हम्म, ज्यादा बेहतर चेक्स प्रोवाइड कर रही है। यस, And they recently raised, they had a funding round, and people will work with them. So such because kind of, their audit reports हाँ, and everything are very authentic, and पैकरा के साथ मिलके, and they're doing a lot of वो अच्छा, क्रेडिट रेटिंग कर रहे इसी हैं। तरह स्टेट बैंक अप्रूवल, स्टेट बैंक ने दिए मर्चेंट वॉलेट के। हाउएवर उसकी अभी चीजें होनी बाकी हैं बहुत सारी, और लॉन्च भी नहीं किया किसी ने। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। मर्चेंट वॉलेट, बैंक्स आपका मसला शायद ना हल कर पाए, लेकिन मर्चेंट वॉलेट्स राइट फ्रॉम द रेयर व्यू विल कम इनटू द फ्रंट एंड स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखें, इस ये अगेन मैंने कहा था ना सर, ये काम है डिजिटल पेमेंट्स का फोकस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, उसके पास एक हेड ऑफ ट्रेजरी भी है, उसके पास एक हेड ऑफ रिटेल भी है, और उसके पास एक छोटा सा कोने में बंदा बैठा है, चीफ डिजिटल ऑफिसर। तो उसकी बात हमेशा दब जाएगी उस पूरे रूम के अंदर। इधर चीफ डिजिटल ऑफिसर सीईओ होता है कंपनी का, ठीक है? अग्रीड। और वो कहता है मैंने जिंदा मरना या जिंदा रहना इसी में है। एक बड़ा डिबेट हुआ करता था वाइल इन माय डेज इन बैंकिंग, के बैंकिंग सर्विस को मार्केट करने का सही तरीका क्या है? क्या इमोशंस हैं, या यू गो अप द लैडर द सेम वे दैट एन एफएमसीजी प्रोडक्ट इज मार्केटेड, लाइक अ पेरिशेबल इज मार्केटेड? देन द आंसर इज, you have to create tangibility, and you have to take it the same way as it is done in FMCG. आपकी ब्रांड हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रांड सीड यहाँ डेवलप करना उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि आप ऑफ किसी कोर्स। FMCG में करते। सो आई थिंक आपका जो सवाल का जवाब था इन शॉर्ट ये सर, probably in less than a year you would not have this complaint, प्रॉमिसिंग। because it's not Kino only, it's so many other big innovative good players. और असल में जो प्ले है ना, वो अक्वायरिंग का प्ले नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, फ्यूचर अक्वायरिंग का से ज्यादा बड़ा फ्यूचर मैं कंज्यूमर और मर्चेंट वॉलेट्स का देखता हूँ। हम्म, हम्म, मतलब that is a 20-30 times bigger play than ऑफ conventional, and POS acquiring is now called conventional acquiring, by the way. So just यस, have a look at the evolution in the thought यस। process. नहीं, नहीं, आई एग्री विद दैट।
Wonderful conversation. My final question, Saad, is how do you feel CXO Global Forum has added value to you as an individual or to your company and your processes? Few words on that. जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे CxO ग्लोबल कर्टेसी यू मुझे अप्रोच किया गया. इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ अ क्लब It's an which honor for us to have people like you who are so enterprising. थैंक यू सर. दूसरी बात ये थी कि even through those chats that happen and the reports that are shared, we get to learn a lot, especially in the last 2 3 years. Our journey has been very busy. And wahan, whenever I get time, once a week, twice a week, I get a very good insight as to what's happening. मेरी कोताही है कि मैं बहुत सारे नेटवर्किंग डिनर्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सका. मेरी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है कि CxO ग्लोबल के ऑलमोस्ट हर इवेंट में मैंने आना है इंशाल्लाह. एंड Inshallah, we will look forward to that. इंशाल्लाह, सो इट्स अ वेरी जैसे गुड न्यू फोरम. ईयर रेजोल्यूशन लोग कहते हैं फौरन तोड़ दी जाती है 2 जनवरी को, तो ये वाला काम ना कीजिएगा. सिंस लास्ट 8 इयर्स तो मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन देखते हैं क्या माशाल्लाह, that's another first for us. थैंक यू एंड इट विल बी एन आई होप इंशाल्लाह कि ये और बड़ा हो और इंशाल्लाह हम और इसको इवॉल्व करता देखें. Inshallah. Thank you very much, Saad. Thank you for your time. Hope to see you soon again. Allah इंशाल्लाह Hafiz. इंशाल्लाह Thank you. थैंक यू. प्लेजर Thank टॉकिंग. you. Allah Hafiz.